Hello everyone, welcome back to another video, and this video is very useful for those people who are going to appear for the upcoming ICI campus placement and the outside the campus placement interviews. So as you are aware, CA final result is coming on 9th of January. So after that, this video is very useful for you because in this video I'm going to share how you can crack ICI campus placement and the other outside interviews also. So before I start, if you are new to the channel, do subscribe it and do follow me on Instagram and LinkedIn also. So let's get started with this video. I'll share my screen and give me a second, guys. Yeah. So these are the topics which I'm going to cover in this video. So basically, the first and the first important topic is what is the company's selection criteria? What is expected in the personal interview and GD? Do's and don'ts for an interview. Bonus tip is what topic and subject to study for an interview and type of questions and how you can prepare your resume for an interview. So let's get started with the first one, company selection criteria. So देखो, जो big companies हैं like big MNCs, for example, Aditya Birla Group, HUL, Bain, and Reliance. So they have some set of criteria जिसके बेसिस पे वो कैंडिडेट को इंटरव्यू में लेने के लिए सिलेक्ट करते हैं. फॉर फर्स्ट criteria is they prefer a articleship experience from big four organizations. Let me clarify. I have not done my articleship from big four, but still I work for one of the big four and I left that also. So don't lose hope once I said कि big four का experience preferred है. So big four experience is preferred. Second is your college over correspondence. Yes, these MNCs have a criteria that you have done your graduation by a regular by going to a college regularly, not from a correspondence. I also feel this is important because I due to this I have not also get shortlisted by few MNC companies because I have not done my graduation from a regular college. I did through a correspondent. So this is another criteria. And if you have third criteria, if you have not done your articleship from the big fours, then your CV is so strong like that you have done a very good work in a mediocre form. तो वो एक इम्पोर्टेंट टास्क रहता है, इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है उनके लिए. तो सी हर कंपनी का एक अपना अपना क्राइटेरिया है, बट दिस क्राइटेरिया आई एम टेलिंग इज फॉर द बिग एमएनसीज. जनरली ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं. एंड सम कंपनीज डोंट गो इनटू दिस मच डिटेल कि आपने कॉरेस्पॉन्डेंसी किया है या कॉलेज कैसे ऑब्टेन किया है. सो दे डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट हाँ बिग एमएनसीज करते हैं ये चीज. So next is the what is expected in the personal interview and the group discussion. So personal interview and group discussion सबसे पहले and important चीज है that you should be calm, cool, and be honest. Don't try to make an interview fool by showing that you know everything, but आपको आता नहीं है. फिर भी that होता है ना that you don't know the answer to the particular question, but you are trying to give the wrong answer. So any organization don't want those people who are liar. First of all, means they are dishonest, they don't know the thing, but they are trying to be over smart that they know. So don't. Third, second change is sorry. Second is try to make a eye contact with each of the interviewer. For example, there are three, four interviewers. So if anyone is asking you a question, don't look at one person only while answering the question. Try to make a eye contact with all of these three, four, whatever number of interviewers are sitting in front of you. Try to do that because one person is asking question, another person is judging you. This is your communication skills, your body language. So it happens. Try to make a eye contact with every interviewer which are in front of you. And second, let me come to the group discussion part. So what generally happens in group discussion, there are around 9 to 10 people in a group. So you will be given a very generic topic, very generic topic, and आपको उस पे डिस्कस करना होता है.
बट इन दिस ना डोंट मतलब आप ना एग्रेसिव नहीं होना है ग्रुप डिस्कशन में, बिकॉज यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी लीडरशिप स्किल्स, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर एंड हाउ बेसिकली हाउ मच यू आर रिस्पेक्टिंग अदर्स पर्सन्स ओपिनियन ऑल्सो। झगड़ा का नहीं करना है हमें वहां जाके ग्रुप डिस्कशन में। Be calm and let the other person finish, and then you speak by saying a very courtesy words. For example, like if someone is speaking and two three people are also trying to start, so say, let me speak first, then you can continue with what once I end this conversation. Try to be very calm over there also. So what interviewer is trying to assess through a group discussion is your leadership skills, your communication skills, and your knowledge first. So these are the two, three important things which they are trying to assess through a group discussion. So be very careful while entering for a group discussion. Third thing is the do's and don'ts for an interview. Basically, do's and don'ts में here I would say uh, this is basically for if you are attending a virtual interview or a physical interview. सबसे पहले मतलब वेल ड्रेस होके जाना है, and don't use any unfair means if you are giving the interview virtually. So don't try to be very smart. मतलब सामने अपने कोई अपना एआई लाइक के टाइप में चैट जीपीटी बहुत यूज हो रहा है, तो डोंट बी ओवर स्मार्ट देयर, बिकॉज देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर जो हर चीज कैच कर लेते हैं। तो डोंट बी ओवर स्मार्ट। आपको कुछ मतलब अनफेयर मीन्स यूज नहीं करना है while giving an interview, and this is possible, not possible in physical interview because you are sitting in front of the interview, so you can't do anything over there. So these are the do's and don'ts for the interview. Now the most important thing is the what you need to study for an interview. ठीक है, इंटरव्यू कर रहे हैं बट पढ़ना क्या है, what subject and what topic, this I'm going to tell you because this is very important for you to prepare for an interview. So let's go subject wise subject. First subject comes is financial reporting. So these are the very important and very frequently asked India's in an interviews. So make a note of these. India's 2, 7, 16, 23, 24, 103, 116, 115 and 109. So आपको इनमें से जो इनकी कीवर्ड्स हैं, इंडिया बेसिकली इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया में कुछ ट्रीटमेंट जो इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स हैं वो पढ़ लेना, कुछ भी पूछ सकते हैं ट्रीटमेंट रिलेटेड। फॉर एग्जांपल जैसे इंडियस 115 है, इसमें 5 स्टेप मॉडल है। आपको पूरा इंडियस को इतना ध्यान से नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप सिर्फ 5 स्टेप मॉडल को अच्छे से पढ़ के जाओ। मीन्स इफ एन इंटरव्यू आस्क्स ने व्हाट इज अ 5 स्टेप मॉडल, क्विक से उसको आंसर देना है कि दीज आर दी 5 स्टेप मॉडल। ठीक है, तो स्टेप्स को अच्छे से लर्न करके जाना। सेकंड इज ऑडिट। ऑडिट में आपको जो एसेस पढ़ने हैं दैट इज 230, 240, 300, 315, 530, 610, 700, 701 and read some other Indias also as per your convenience, but these at least इतना तो पढ़ के जाना। Now comes to the taxation. DT में go for a TDS section. DT में until unless आपका इंटरव्यू DT फील्ड के लिए है तो फिर एक अलग चीज है, फिर तो आपका पूरा इंटरव्यू टैक्सेशन बेस्ड हो जाएगा। वरना जनरली टैक्सेशन पे स्पेसिफिकली डायरेक्ट टैक्स पे इतना ज्यादा नहीं पूछते। एंड इसमें आईडीटी ऑल्सो आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर। सो आईडीटी में आपको लाइक सप्लाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑफ सप्लाई कितने होते हैं, रिटर्न की ड्यू डेट्स वगैरह थोड़ा बहुत रिकॉल कर लेना, और स्टडी दोज ऑल्सो। And the important thing is now in a whole interview is your articleship experience. So for example, if you have done your articleship in audit field, so what they do now, they ask you a question, practical question, not a bookish question. For example, they can ask you how you are going to verify the sundry debtors of a company. If you have done your in your articleship, you are able to answer this question. If you don't, then please be honest here. Say no, sorry, I don't know the answer of this particular question. They will automatically move ahead to the next question. So articleship experience is very important for a job interview, क्योंकि आपके मेजोरिटी क्वेश्चंस आपके सीवी के आपने जो काम किया है उसके बेसिस पे आते हैं। तो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस में आपने मतलब, एंड हाँ यहाँ पे ना डोंट बी ओवर स्मार्ट अगेन।
कुछ लोगों को मैंने देखा है सीवी में आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस में कुछ भी लिख देते हैं। मतलब उन्होंने, दिस इज द रियल एग्जांपल, मतलब few months back in my company we are interviewing some people for particular position. उसने सीवी में लिख दिया उसको ऑडिट में सब आता है। was on the term he uses a very bookish term, मतलब जो स्टैंडर्ड टर्म्स होते हैं उसने वो लिखे रखे थे अपने सीवी में। when he came for an interview he's simply saying that sorry I don't know anything about audit, but yeah I'm ready to learn. So don't try to make these kind of mistakes, because mention what you know, because anything can be asked basis your CV also. So next topic is type of questions asked. Although I've covered this previously in articleship Bale mein, but I'll give you more example over here. So they will give you a case study. I remember I was giving an interview for one of the big four. It is KPMGS. I'm giving an interview for KPMG, and the partner asked me कि आदित्य मतलब उनको क्या था ना, उन्होंने टॉपिक दिया। Now they are trying to get a, for example, the topic I'm not able to recall exactly what they, but what they do, for example, they give a topic of AI. What is your opinion on AI from the audit point of view, whether it is good for us, whether it is not good for us, how you see this impacting in upcoming future, for let's say 5-10 years में इसका क्या impact होगा हमारे ऊपर। तो प्रैक्टिकल चीजें वो पूछेंगे आपसे, केस स्टडीज पूछेंगे। नेक्स्ट दे कैन आस्क यू इज, अच्छा ओके, यू फाउंड दिस डेफिशिएंसी इन एन ऑडिट, ऑब्जर्वेशन आपकी आई, कुछ बड़ी ऑब्जर्वेशन है। अब आप इस पे अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे, आपकी ओपिनियन क्या होगी, मतलब व्हाट टाइप ऑफ ओपिनियन यू आर गोइंग टू गिव। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच दे आस्क, एंड डोंट इन दिस केस ना व्हाइल आंसरिंग ना पैनिक नहीं होना है। रिमेन कूल काम एंड कॉन्फिडेंट कि दैट यस आई नो द आंसर एंड आई विल गिव दैट आंसर टू यू, एंड नो इफ यू डोंट नो सिंपली से नो। So next and the last thing is how to prepare your resume. So basically, in your resume, na, what company did while selecting your CV for an interview, they have some predefined keywords. For example, uh, आपने आपको अगर SAP की नॉलेज है तो दे सर्च फॉर दोज सीवीज जहाँ पे SAP लिखा हुआ है, तो उनके पास सारे SAP वाले सीवीज आ जाएंगे। तो अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पे काम किया लाइक SAP, Oracle, तो आप इनका नेम उसमें कीवर्ड लिखिए अपने सॉफ्टवेयर में। आपके जो नॉलेज है जिनके सॉफ्टवेयर के नेम लिखिए सीवी में। ट्राई टू गिव मोर नंबर्स इन द सीवी। फॉर एग्जांपल आपने कोई बिग कंपनी का ऑडिट किया है तो मेंशन द टर्नओवर, लाइक 100 करोड़ कंपनी का ऑडिट किया तो मेंशन 100 करोड़। अगर आपने कोई किसी क्लाइंट का बहुत बड़ा फॉर एग्जांपल टैक्स सेव किया था, मेंशन दैट आई हैव से फॉर एग्जांपल 2 करोड़ आप मैंने सेविंग किया, 3 करोड़ मैंने सेव किया टैक्स। तो mention the numbers in the CV. Don't mention is your interest, because they are not interested in what are your interests. You can tell these interests in the while giving an interview, while giving your introduction. So don't mention these interests and everything. Simply write whatever your work experience, and work experience में very specific लिखना है, सब कुछ नहीं लिखना, important चीजें लिखनी है उसमें। लाइक आपने अगर कहीं पे आपने टीम लीड का रोल लिया है अपनी टीम में आर्टिकलशिप टाइम पे, तो आप उसको लिखो। आपने किस कंपनी का ऑडिट किया है आप लिख सकते हो, बट प्रेफरेबल नहीं होता है, मोस्टली लोग आपने इंटरव्यू किया है, क्योंकि उससे इंटरव्यू को पता लगता है कि आप किस लेवल की कंपनीज के साथ आपने काम किया है, एंड दैट मतलब यू कैन हैंडल देयर वर्क आल्सो if you have done the articleship sorry audit for these big companies. So try to mention these things in your CV. And the last thing is I would like to advise is be prepared for first question, that is how, tell me something about yourself. This is the very common question asked in every interview, because interview start ही इसी question से होता है, tell me something about yourself. So try to make a 1 minute content for this video, oh sorry, content for this question, tell me something about yourself. इसका आंसर पहले से प्रिपेयर करके रखो। ये आपको एक्सपेक्ट है कि आपके पास 100% आएगा ही आएगा, ये पहला ही क्वेश्चन होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन।
इसका आंसर बहुत अच्छे से पहले से डिसाइड कर लो कि आपको क्या आंसर देना है इसका। ठीक है ना। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक मैंने इतने डिस्कस किए हैं ये आपके यूजफुल रहेंगे। एंड do subscribe my channel and share this video with your friends and ask them to subscribe also. I'll see you in the next video. Till then, bye bye.